सबको कुछ आमदीद कहना चाहूँगी. I'd like to welcome all our distinguished guests who have joined us for this discussion and this seminar. We have with us today some representatives from the government, the Punjab Affordable Housing. We have also from the Sindh government some people, and some faculty, some community representatives, some people from the UCs, and the networks that we have made during our fieldwork, as well as some professionals, some architects and faculty. Thank you so much to join us today for this session. So our seminar today is titled High Density Neighborhoods, Issues and Solutions. Samia, can you put on my intro presentation? So I'd like to briefly mention that we are collaborating today with the Punjab Affordable Housing and EAROPH, and basically ये जो seminar है ये हमारा project है NRPU जो कि HEC से funded है. This is part of the activities of that. So basically we have two sessions in the seminar. The first one is going to talk about specifically about Karachi, जिसमें हमारी findings हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके अलावा we'll have the second session which will be about the case studies and some works from Punjab and Sindh. So the objective of this seminar is to share the research findings from our study, what the different issues and the solutions, and identifying how the issue of high density housing and so many allied issues can be talked about in terms of roles and responsibilities, and to also discuss some adaptive solutions for how housing can be upgraded in low middle income settlements. So just to give you a little bit of a background, I would say literature, from the perspective of literature, density is basically a ratio which is looking at the proximity of people in an area. तो ये तो इसकी एक physical feature है जिसको लोग समझते हैं और देखते हैं. इसके दो रुख हैं basically, जिसमें कहते हैं कि globally high density housing is said to be the approach to urban planning today, so it's supposed to be the trend, but the other thing is that if it's not properly done and if the planning is not there, then it can become there can be so many issues with it. So there is the physical aspect of it, and then there is the experience of density. तो हमारी रिसर्च में हमने ये दो चीज़ें देखी हैं कि कितनी डेंसिटी है और लोगों ने इस डेंसिटी को कैसे एक्सपीरियंस किया है जब वो रहते हैं इन इलाकों में, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है और क्या इश्यूज़ वो फेस करते हैं. Densification is a process. Basically, progressive rise in built and population density over time is understood to be densification, and it's a response to population growth, बढ़ती आबादी और rapid urbanization की वजह से एक change है जो कि natural आप कह सकते हैं कि लोगों को housing की ज़रूरत होती है, और there is a process in terms also कि real estate development होती है और densification होता है. So density is a critical capacity to be packaged as an ideal setting. Planning के अंदर, new housing development के अंदर density is
seen to be an ideal value. अच्छी density यानी आप walk करके different जगहों तक जा सकते हैं, easily access कर सकते हैं. Location बहुत matter करती है, housing areas की design of houses है, ये चीज़ें matter करती हैं to how the community and generally the living quality comes together. दो किस्म की densification होती हैं, define की जाती हैं कि एक hard densification है जो कि policy या planning के through बनाई जाती है, और एक soft densification है which is prescribed adjustments of neighborhoods. This is more bottom-up, people-centered, and this is faced not only by cities in Pakistan but also in other cities worldwide, Western and Asian, both African as well. So इसके अंदर जो एक टिपिकल चीज़ होती है वो ये कि ऑथराइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव साइट इसके अंदर कमज़ोर होती है, एंड इट लीड्स टू पुअर क्वालिटी ड्वेलिंग्स, देयर इज़ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लिविंग, वर्टिकल एक्सटेंशंस होती हैं, प्लॉट्स की फर्दर सब डिविजन्स होनी शुरू हो जाती हैं. सो दिस बिकम्स अ मेजर चैलेंज फॉर अर्बन रेगुलेशन. इट हैज़ बीन टैकल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. So this is an issue that can be taken up to be addressed. Some characteristics of high density housing are that this is said to be the way forward for sustainable development. इसको sustainable बनाया जा सकता है और globally इसके ऊपर बात हो रही है. Compact, walkable, mixed use, and there are varying proportions for built and open space. इसमें जो issues planning के अंदर identify किए जाते हैं वो infrastructure है, ख़ास तौर पे privacy, sunlight, ventilation का access है घरों के अंदर, और proper services, etc. अगर ये चीज़ें नहीं होती तो उसकी वजह से हेल्थ मुतासर होती है ख़ास तौर पे. So that's a very brief kind of introduction to this seminar. I'd also like to mention, yes, I've mentioned our collaborators. And we have, this session is hybrid. We have a Meet link, so we have an online audience. So for those who are not able to be here physically can join us online. And it's a way that we can also connect to places outside Karachi. Our session is also being recorded just to inform our audience. And thank you. So I would invite Ahmed to say a few words to say the talawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. I would like to invite architect Ramiz Baig to give a short address and tell us about the organization EAROPH, which is Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements. They are one of our collaborators today for this session. Ramiz. Masooma. Assalamu alaikum everyone. On behalf of EAROPH Pakistan, it's a privilege to be associated with this seminar. Very happy to be here because EAROPH Pakistan being a relatively new entity here, and the fact that we cover topics like human settlements and planning, an opportunity like this was too hard to miss. We are constantly engaged internationally in trying to come up with solutions for what is becoming a real challenge. And you know, it's scary when
internationally people talk about quality of life going down, when they start getting concerned about running out of resources like water, having livable land, issues with flooding, etc., because you can only imagine if they are concerned with what they have, things are usually, the picture is gloomier here. So thus we should, if international media is concerned this much, we should be really concerned. And we are seeing, today, as we stand today, we are seeing the effects already of population growth, of global warming, of how the climate is being affected, and how us as human beings encroaching where we maybe should not be encroaching, and how nature is kind of fighting back. Sometimes, we are the reason for the problems that we face. But we know for a fact that as far as climate is concerned and all the impacts that we are facing, for majority of it, it is somebody else's doing. It is the contribution of much larger industrial countries, their way of how they have been existing in the last many years. That has had an impact, a tremendous impact on us, and will continue to have it here. But coming back, we are looking forward to seeing the works of this Punjab housing and what's happening via the Sindh housing, where they're coming up with hopefully the right kind of solutions for us moving forward. Before, unofficially, we were off the record discussing whenever the time that it takes for us to come up with a solution, the problem has manifested itself a little bit more. So how can we keep up? How do we increase, our productivity to a sense, or come up with solutions which can make an impact today? Because we need solutions today, not tomorrow. Tomorrow is already too late. And how do we do that? And then, of course, stop the ever expansion. So there's so many different avenues, and yes, one way is to see the world trends and see where they're going with all of this, but we also have to come up with our own solutions. Sometimes, especially in city life, we are so caught up in how fast moving our lives are that we never get time to reflect and pause and see what we can offer for the betterment of living, really. I was just seeing a survey, and this was again an international organization. You get different facts and figures from everyone, but according to this, when looking at city metro area, Karachi stands at number 3, so only behind Shanghai, Delhi, and then there is Karachi. Over 20 million population in city proper. So you can only imagine in our suburbs, in our outskirts, how many more of us are there, and thus the problems that we face are that much more challenging. So EAROPH as a platform, as a provider of voice, as a place where we can get international experts to come and share their views, see examples of where they've been able to address and solve issues that we face today. Why reinvent a wheel, or why repeat the same mistake which has already been made somewhere else? So this is one of the best parts of having such collaborations, that you get to learn and then you are able to forge your own path. So for that, EAROPH and EAROPH Pakistan is always here, and we look forward to many such collaborations in the future. Just some info that's there. It's for EAROPH. One of the wonderful things about that organization, it's not profession specific to join and to be a part of it. So say our other sister organizations that are there, either they are for lawyers or for architects or for urban planners, EAROPH that way kind of opens its doors for everyone. So it's a fantastic platform to be a part of and have your voice heard. And
and of course, interact with others who all share the same concern, which is how to address human settlements issues all over the world, especially in our region. So looking forward to this seminar. Great work, Dr. Masooma, Dr. Saeed. Thank you so much. Management and green spaces, for example, can be added to improve quality of life for residents. Delhi Colony is not just a place, it's a living narrative of resilience, community strength, and identity. पांचवा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो तेजी से वर्टिकली एक्सपेंड हो रहा है। अर्बन माइग्रेशन और नौकरी की तलाश ने लोगों को शहरों की तरफ बसने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन जगह की कमी है और लोग सिटी सेंटर या अपने काम की जगह के करीब रहना चाहते हैं। इसके नतीजे में इनफॉर्मल हाई राइज डेवलपमेंट्स तेजी से बढ़ रही हैं, मगर ये डेवलपमेंट्स बगैर किसी फॉर्मल रेगुलेशंस या प्लानिंग के बनाई जा रही हैं। यूएन हैबिटेट के मुताबिक कराची में 700 से ज्यादा इनफॉर्मल सेटलमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें शहर की 60% से ज्यादा आबादी रिहाइश पजीर है। इनमें से बहुत सी इमारतें कमजोर बुनियादों पर खड़ी हैं और ये सिर्फ वक्त का मसला है कि ये गिर जाएं। इन इमारतों के अंदर जिंदगी हर रोज एक जंग है। यहाँ एलिवेटर्स नहीं होते, सीढ़ियाँ टूट चुकी होती हैं, हैंड रेलिंग्स या तो टूटी हुई होती हैं या बिल्कुल ही गायब। हवा और रोशनी का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं, और जब कोई आफत आती है तो बाहर निकलने का कोई महफूज रास्ता ही नहीं होता। कुछ बेतरतीब ऊंची इमारतों में एलिवेटर्स तो लगाए जाते हैं, लेकिन अक्सर गलत तरीके से नस्ब किए जाते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। बगैर मेंटेनेंस के ये एलिवेटर्स मौत का फंदा बन जाते हैं। हर रोज़ हमें बच्चों के गिरने, लोगों के जख्मी होने या जान से जाने की खबरें सुनने को मिलती हैं। ये सब अब इस शहर में मामूल बन चुकी हैं। ऐसी खबरें अब हमें हैरान नहीं करती, ये रोजमर्रा की रिपोर्टिंग का हिस्सा बन गई हैं। लोग तकलीफ उठाते हैं, खानदान गम मनाते हैं और फिर भी ये सिलसिला जारी रहता है। इन इमारतों के रिहायशी रोजाना कई मुश्किलात का सामना करते हैं। औरतें जो इन इमारतों में रहती हैं अक्सर रोजाना 5 से 7 मंजिलें चढ़ने पर मजबूर होती हैं, जो उनके घुटनों पर दबाव डालता है और इससे आर्थराइटिस और मुस्तकिल जोड़ों के दर्द का खतरा बढ़ जाता है। हामला औरतें, बुजुर्ग लोग और वो अफराद जो माजूरी या लंबी बीमारियों का शिकार हैं, सबसे ज्यादा खतरे का सामना करते हैं। बच्चे रोजाना स्कूल के भारी बैग उठाकर इन टूटी हुई सीढ़ियों से चढ़ते हैं। ये उनके जिस्म, सांस और ज़हनी हालत को मुतासर करता है। रोजमर्रा की जिंदगी तो मुश्किल है ही, लेकिन इन इमारतों में रहने की वजह से लोगों की सोशल गैदरिंग भी मुतासर होती हैं। जगह की तंगी और आमतौर रफ्त की सहूलत ना होने की वजह से लोग अपने घरों में किसी भी किस्म की तकरीब या समाजी इस्तेमाल नहीं कर पाते। जनाजों के वक्त ऊपर की मंजिलों से मैयत को नीचे उतारना इंतहाई तकलीफ दे और ख़तरनाक काम होता है।
ऐसी हंगामी सूरत हाल में जैसे कि आग लगने की सूरत में इमारत का खाली करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इमरजेंसी वर्कर्स के लिए इन इमारतों में ऊपर नीचे जाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेचर्स या मेडिकल इक्विपमेंट लेकर चलना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। तिब्बी इमदाद के दौरान जब स्ट्रेचर या एलिवेटर दस्तयाब ना हो तो एक बुजुर्ग मरीज को टूटी हुई सीढ़ियों से नीचे उतारना इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। थोड़ी सी ताख़ीर भी जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। ये मुश्किलात सिर्फ रिहायशियों तक महदूद नहीं, सर्विस देने वाले अफराद भी इन इमारतों में अपनी सर्विसेज पहुंचाते हुए कई दुश्वारियों का सामना करते हैं। साफ पीने के पानी की कमी ने बॉटल्ड वाटर को एक ज़रूरत बना दिया है, लेकिन जिन इमारतों में एलिवेटर्स नहीं होते वहाँ भारी पानी के गैलन्स को कई मंजिलों तक उठाकर ले जाना खतरनाक और निहायत थका देने वाला काम है। पानी वाले इन इमारतों में अपनी पीठ पर 40 किलो से ज़्यादा का वजन उठाकर दिन में कई बार 5 से ज़्यादा मंजिलों तक चढ़ते हैं। कचरा उठाने वाले रोजाना इन सीढ़ियों से भारी कचरा नीचे लेके जाते हैं, जो उनकी सेहत पर बुरा असर डालता है। मजदूर जो शिफ्टिंग या रिपेयरिंग के लिए बुलाए जाते हैं, उन्हें हर मंजिल पर भारी सामान उठाकर ले जाना पड़ता है। इसके नतीजे में वो कमर दर्द, थकन और संगीन जिस्मानी मसाइल का सामना करते हैं। इन टूटी हुई सीढ़ियों पर काम करना, जहाँ हाथ पकड़ने की हैंड रेलिंग्स नहीं होती, इंतहाई खतरनाक होता है। सिर्फ एक गलत कदम भी जिंदगी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इन इमारतों में मजदूर जब रिपेयर का काम करते हैं तो वो अक्सर टूटे हुए स्ट्रक्चर्स और खुली वायरिंग के नीचे काम करते हैं। उनके पास कोई मजबूत सहारा नहीं होता। ये सिर्फ गैर महफूज नहीं बल्कि गैर इंसानी भी है। ये बिल्डिंग्स जो जल्दी में बनाई गई हैं, मजबूरी में बसाई गई हैं और पॉलिसी में नज़रअंदाज की गई हैं, आज शहर के मंजर को एक खौफनाक रुख दे रही हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बेहतर अर्बन प्लानिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के जरिए हम वर्टिकल लिविंग को रोज़मर्रा की एक मुश्किल ज़िंदगी से बदलकर एक महफूज, इज्जतदार और इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट का एक बेहतरीन मॉडल बना सकते हैं। शुक्रिया। Thank you. The project and its research findings. Samia Sarfaraz is an architect. She has a master's in architecture and she has been working on the project of high density neighborhoods for about a year and has been actively involved in fieldwork and research analysis. Samia?